Today, our focus is on Ladakh, where demands for a separate state and inclusion in the 6th schedule have sparked intense debate and speculation. Let's take a closer look at these developments and understand them better. So, braving the extreme cold, thousands took out a protest march in Ladakh, demanding statehood and 6th schedule status on Saturday. The protests were jointly organized by the Leh Apex body and Gargil Democratic Alliance. Besides the two demands, the outfits have also demanded a dedicated Public Services Commission and 2 parliamentary seats for Ladakh. Following their demand, the Union Home Ministry called a meeting of the Ladakh High-Powered Committee, chaired by the Minister of State for Home, Nityanand Rai, in New Delhi on February 19. Videos from Ladakh showed thousands holding banners and placards taking part in the march, stating that only a full statehood where they elect the representatives to govern the region could fulfill their demand. According to the legal advisor of LAB and KDA, Haji Ghulam Mustafa, the 4-point agenda has been raised by these outfits ever since Ladakh has become a UT. समझता हूँ कि जब से यूटी बनी है तब से हमारी एपेक्स और केडीए की एक डिमांड रही है 4-पॉइंट एजेंडा को लेकर। वो हमारी लद्दाख की जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि लद्दाख में हमने रियलाइज किया है सिंस द टाइम वी हैव बिकम ए यूटी दैट ऑल आवर पावर्स विच वर पीपल सेंट्रिक, जो लोगों को सेंट्रिक था, जो हमारे पब्लिक स्पिरिटेड जो इंस्टीट्यूशंस थी लद्दाख में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। आपको पता है जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तब वी हैड 4 members in the legislative assembly and 2 members in the legislative council. But now in Ladakh we do not have any representation in the assembly. और आपको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा है और हमारे पार्लियामेंट ने भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर है उसको रिस्टोर करेंगे और उसमें जो असेंबली होगी वो वापस आएगी। बट इन दैट केस, इन आवर केस वी डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन व्हाटसोएवर। जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे एमपी के सूरत में है, जो हम समझते हैं कि लोगों की कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक राइट्स है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई हैं। इसलिए हमारी हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि हमें करगिल में, स्पेशली लद्दाख में, हमारे यहाँ पे लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लद्दाख को भी एक असेंबली देनी चाहिए और हमारा को स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए। और रीजन इसलिए है क्योंकि लद्दाख जो एक है स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है, और सेकेंडली जो यहाँ की जो लोग हैं वो इट्स ए ट्राइबल मेजोरिटी एरिया, एंड थर्डली बिकॉज इट हैज ऑल द फीचर्स दैट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जो हमारी तरह जो ट्राइबल एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट में, आसाम है, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा है, उनको न सिर्फ वो स्टेट है बल्कि वहाँ पे ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल है जिनको लॉ मेकिंग पावर्स है, यानी एक 3-tier इंस्टीट्यूशन है विच इज एक्सट्रीमली पावरफुल। Whereas in the case of Ladakh, you can see that जो हमारे हिल काउंसिल्स हैं जिसमें नुमाइंदगी होती है लोगों की, उसको भी लॉ मेकिंग पावर्स नहीं है, यानी वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुकी है आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। इसलिए हमारी डिमांड है हमारे लद्दाख वालों की, एपेक्स और केडीए की जो सदारत में जो हमारी मूवमेंट चली है, जिसमें हमारे बहुत सारे टॉक्स भी हुए हैं हमारे होम मिनिस्ट्री के साथ। हमारी डिमांड ये है कि हमारे लद्दाख को एम्पावर करने की जरूरत है और जो लद्दाख के लोग हैं, यहाँ के लोगों को अख्तियार दिए जाने चाहिए कि वो अपने राइट, अपने लॉज खुद बनाए और अपने जो फ्यूचर है लद्दाख का खुद डिसाइड करें। सेकेंडली जो हमारी जो डिमांड है वो 6th शेड्यूल की डिमांड है, क्योंकि आपको पता है, पूरे लद्दाख को पता, पूरे इंडिया को पता है, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कई सारी बार, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसमें कई सारी बार रिकमेंडेशन दी है आफ्टर 2019 की लद्दाख को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो लोग हैं वो मेजॉरिटी ट्राइबल एरिया और ट्राइबल लोग हैं। तो इसलिए हमारी 6th शेड्यूल की डिमांड है कि अनलाइक सिमिलरली ऑन द ग्राउंड जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को हमें भी 6th शेड्यूल के प्रोटेक्शन देने जाने चाहिए। तो इसलिए आप देख रहे हैं क्योंकि हमारी जो इकोलॉजी है यहाँ की वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। आपको पता है इस साल स्नोफॉल की वजह से कितनी ज्यादा हमें मुश्किल आते हैं, और जो हिमालयन रीजन है वो पूरी डिसाइड करती है पूरे वर्ल्ड का इकोलॉजी कैसी होगी, पूरे वर्ल्ड का जो वेदर होगा, क्लाइमेट होगा, वो सारा डिसाइड करते हैं। इसलिए जरूरी है, मैं समझता हूँ, नॉट ओनली फॉर आवर कंट्री, नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख बट फॉर पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड टू रियलाइज दैट हमारे जो हमारे इंडिया का भी एक एजेंडा है 2040 का जो गोल है हमारे एनवायरनमेंट का, उसके लिए हमें जरूरत है कि लद्दाख जैसे एक एनवायरनमेंट को जो प्रिस्टीन है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ज्यादा फ्रेजाइल है, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इसलिए हमारे 6th शेड्यूल की डिमांड है। और आपको पता है कि जब से हम लद्दाख के यूटी बने हैं तब से हमारे यहाँ पे कोई भी गेजेटेड जॉब्स अभी तक नहीं हुए हैं। आप जम्मू कश्मीर में अगर देखेंगे उनके 2 बैचेस ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं और तीसरे बैच का भी इंटरव्यू होना बाकी है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस इन प्रोसेस है। लेकिन लद्दाख में अगर आप देखेंगे देयर हैज नॉट बीन ए सिंगल गेजेटेड पोस्ट सिंस 2019, और आज 5 साल होने को आ गए हैं। दैट इज व्हाई वी बिलीव दैट देयर इज अ नीड, immediate and urgent need for Ladakh to have a public service commission of its own. And fourthly, क्योंकि आपको पता है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, हमारी सिर्फ एक लोता हमारे पास एक एमपी रह चुका है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लद्दाख की जो एमपी की जो सीट है वो बढ़ा दी जाए, और जब हम स्टेट बनेंगे, जब हमें लेजिस्लेचर दिया जाएगा, देयर शुड बी अ सीट इन द राज्यसभा फ्रॉम लद्दाख। इसलिए हमारी ये डिमांड है। जो पूरे आज आपने देखा, जो बंद के हवाले से आपने देखा, पिछली बार भी जब हमने बंद का कॉल दिया था
पूरे लद्दाख के एक एक ब्लॉक ने, एक एक सूबे ने यहाँ पे इसका साथ दिया है। आज भी अगर देखेंगे लेह में ह्यूज जो नंबर्स में लोग आए हैं, करगिल में भी देखिए आप, शिद्दत इस कोल्ड में भी लोग आ रहे हैं। आप भी अभी आपने देखा कि प्रोटेस्ट किया यहाँ पर, और साथ में लोगों ने कंप्लीट बंद का यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। इससे ये मैनिफेस्ट होता है, इससे ये पता चलता है कि पूरी आवाम लद्दाख के हमारे एपेक्स और केडीए के साथ है, और उनकी सबकी डिमांड है कि लद्दाख को जल्द से जल्द एम्पावर किया जाए, और जो हाई पावर्ड कमेटी जो बनाई है उसमें एक कंस्ट्रक्टिव, एक हमारे लिए एक अच्छा सा एक आउटपुट दे, जल्द से जल्द हमें एक आउटपुट दे, और न सिर्फ हम टॉक्स से सिर्फ हम महदूद रहें टॉक्स से। Now we'll take a look at the background of the demand. So the demand for a separate state of Leh in Ladakh has roots in the region's unique cultural and geographical identity. Historically marginalized, locals feel that administrative autonomy could better address their distinct needs and aspirations. This sentiment gained momentum especially after the abrogation of Article 370 in 2019, prompting discussions on Ladakh's status and a desire for more local governance. Effect on Indo-China relations. The creation of Leh as a separate state could potentially escalate tensions in Indo-China relations. Ladakh's strategic location and historical border disputes make any change in its administrative status sensitive. China may perceive it as a strategic move by India, impacting the delicate balance in the region and potentially leading to diplomatic challenges or increased border tensions. Balancing local aspirations with international implications would be crucial for India's diplomatic efforts. Implications for India if Leh were to become a separate state. It could have both positive and challenging implications for India. On the positive side, increased local autonomy might foster more effective governance tailored to the region's unique needs, potentially leading to improved development and cultural preservation. However, challenges could arise in terms of maintaining national unity and security. The strategic significance of Ladakh makes any administrative changes subject to scrutiny, especially concerning India's borders, including the sensitive Indo-China region. Balancing local aspirations with broader national interest would be crucial to navigate the implications successfully. The demand for the inclusion of Union Territory of Ladakh in the 6th schedule. Why is it in the news? Recently, the Ministry of Home Affairs constituted a high-powered committee for the Union Territory of Ladakh to ensure protection of land and employment for the people of Ladakh. According to a few members of the committee, the MHA's order is vague and does not address their demand for inclusion in the 6th schedule. In September 2019, the National Commission for Scheduled Tribes recommended the inclusion of Ladakh under the 6th schedule, noting that the new UT was predominantly tribal, more than 97%, and its distinct cultural heritage needed preservation. So why was the committee formed? Let's see at the background. The civil society groups in Ladakh have been demanding protection of land, resources and employment for the past 3 years, after the special status of the erstwhile state of Jammu and Kashmir under Article 370 of the Constitution was revoked by Parliament in 2019. The fear of big business and conglomerates taking away land and jobs from the local people have contributed to this demand. The purpose was to discuss measures to protect the region's unique culture and language, taking into consideration its geographical location and strategic importance. To strategize inclusive development and discuss issues related to the empowerment of the Ladakh Autonomous Hill District Councils of Leh and Kargil. So what is the government's stand? As far as the special status for Ladakh is concerned, the government is not very eager to give it. The MHA informed a parliamentary standing committee recently that the objective for inclusion of tribal population under the 6th schedule is to ensure their overall socio-economic development, which the UT administration has already been taking care of, and that sufficient funds are being provided to Ladakh to meet its overall developmental requirements. According to the Ministry of Home Affairs, Ladakh's inclusion in the 6th schedule would be difficult. The constitution is very clear. 6th schedule is for the Northeast. For tribal areas in the rest of the country, there is a 5th schedule. So according to a recent report tabled in Rajya Sabha, Ladakh administration recently increased the reservation for the scheduled tribes in direct recruitment from 10% to 45%, which will significantly help the tribal population in their development.
However, it remains the prerogative of the government. It can, if it so decides, bring a bill to amend the Constitution for this purpose. What is the 6th schedule? The Article 244 says that the 6th schedule under Article 244 provides for the formation of autonomous administrative divisions, that is, the autonomous district councils, ADCs, that have some legislative, judicial and administrative autonomy within a state. The 6th schedule contains special provisions for the administration of tribal areas in the 4 northeastern states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Each autonomous region also has a separate regional council. The powers of the council. The district and regional councils administer the areas under their jurisdiction. They can make laws on certain specified matters like land, forest, canal water, shifting cultivation, village administration, the inheritance of property, marriage and divorce, social customs and so on. But all such laws require the assent of the governor. They can constitute village councils or courts for trial of suits and cases between the tribes. They hear appeals from them. The jurisdiction of the High Court over these suits and cases is specified by the governor. The district council can establish, construct or manage primary schools, dispensaries, markets, ferries, fisheries, roads and so on in the district. They are empowered to assess and collect land revenue and to impose certain specified taxes. The demand for including Ladakh in the 6th schedule is driven by a desire for more local autonomy and protection of the region's unique identity. It's a complex issue that involves considering the socio-political dynamics and aspirations of the people in Ladakh. Inclusion of Ladakh in the 6th schedule could have various impacts on India. It may enhance local governance, address regional concerns and contribute to preserving the cultural and environmental aspects of Ladakh. The problem with the demand for a separate administration of Ladakh is this: if all the regions' administration is given to the local population, questions of national security will be directly impacted. The broader implication is to maintain a balance with meeting national security needs, that is, which the central government directly oversees and which a state is not capable of, and administrative efficiency. The impact on keeping a close watch on the Indo-China border, for instance, will most likely be compromised because border mechanisms are a subject of the center. A change from UT to state administration could potentially influence the dynamics, either positively through improved regional stability or negatively, if questions of national security and border security are raised. The borders of the state, especially in sensitive and strategic areas like Ladakh, are crucial to national security. The potential impacts of Ladakh's separate statehood include increased tensions with China, diplomatic challenges, internal stability, domestic pressures from separatist movements, and shifts in global perceptions affecting India's strategic partnerships. It was for this reason that Ladakh was declared a union territory. A state is neither reinforced by constitutional tools nor have been empowered with mechanisms to decide issues that directly affects issues of foreign relations. However, there are countervailing factors such as the possibility of a peaceful resolution, economic opportunities, and internal dialogue to address grievances. Navigating these complexities requires careful consideration of the nature of the proposed state, diplomatic efforts, and economic implications. In conclusion, while a separate Ladakh state could bring local governance benefits, it also poses challenges for Indo-China relations and internal stability, necessitating informed decision-making and constructive management.